Hi, good morning, 10th class students. So, we have two sessions. Session number one, introduction of the concept of light. And session number two, we did reflection at plane mirror. Am I right? तो हमने दो सेशंस लिए स्टूडेंट्स. पहला सेशन हमने लिया जिसमें हमने स्टडी किया था कि लाइट क्या है, ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है, लाइट किस कंडीशंस में स्ट्रेट लाइंस में चलती है. दिट वाज द पार्ट वन. एंड पार्ट टू में हमने फर्दर इमेज के बारे में एंड सो मेनी अदर क्वेरीज यू आस्क्ड मी, आई सॉल्व्ड एंड डिड इट राइट. आज हम लोग कुछ प्लेन मिरर के ऊपर कपल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टू spherical mirrors. So I'm going to start with you one question right now that is based upon the plane mirror. हमने inclined किया था 360 upon theta and that was 360 upon theta by n. Hope you remember. अब हम एक कंसेप्ट करते हैं. ये एक प्रॉब्लम है, मैं स्टेटमेंट को डिक्टेट नहीं करता. आई विल बी सिंपली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट. क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप इसको रिप्ले करके स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं. मेरे पास दो इंक्लाइंड मिरर हैं जो कि इंक्लाइंड एट एन एंगल एट O. अब होता क्या है कि इस मिरर में एक बड़ी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं. वी क्रिएट अ सिचुएशन. A ray of light comes like this. This ray is parallel to mirror OM1. इसको मैं रे 1 बोलता हूं. रे 1 parallel to OM1. अब ये यहां देखो, ये इसके ऊपर एक नॉर्मल आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा. रे यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ. अब यहां भी एक नॉर्मल आएगा. जब ये यहां पर रिफ्लेक्ट होगा मिरर OM1 पर, then dear students, it will be refracted and parallel to OM2. तो this is emergent ray, या मैं इसको रे 2 कह लेता हूं. रे 2 parallel to OM2. इंटरेस्टिंग. हमारे पास रे 1 है. रे 1 is parallel to OM1 and ray 2 is parallel to OM2. करेक्ट. बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम जैसा पेस है पढ़ाने का. अब ये बना रहा है एंगल थीटा. तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल थीटा. Now, once again, I repeat the statement. The statement is
there are two mirrors, mirror OM1 and mirror OM2. Both these mirrors are inclined at an angle theta. Both these mirrors are inclined at an angle theta. Correct? Now, there is one ray 1 which is parallel to mirror OM1 and ray 2 is parallel to mirror OM2. What is the angle theta? हमारे पास एक रे मिरर OM2 पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, एंड उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके मिरर OM1 पे आती है एंड आफ्टर दैट OM1 से ये रिफ्लेक्ट होके रे 2 बन जाती है, तो रे 2 OM2 के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा बताइए कितना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप में एक 10th क्लास के या 9th क्लास के ज्योमेट्री को हैंडल कर रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो स्टूडेंट्स ये एंगल भी थीटा होगा। मालूम है क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एंगल है आई, तो ये एंगल भी होगा आई। आप पूछेंगे सर ये एंगल आई है, ये तो आर आर है, आर इक्वल टू आई यार। भैया इसको आप आर लिख लो, फिर आर को आप आई लिख सकते हो, इस आई को भी आर लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। होप देन दिस एंगल इज एक्स, this angle is x. So tell me students, theta plus I, that is 90, must be equal to x plus I, each equal to 90. ये देखिए, this is angle theta, this is I, theta plus I, this is normal 90, x plus I, that is also 90. So I gets cancelled, x is equal to theta. Interesting. So this x angle is equal to theta. जब दो एंगल थीटा ईच है तो थर्ड एंगल will also be theta. The sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. Therefore, 3 theta equal to 180 degree. Theta is equal to 60 degree. So simple, numerical it is. ये किसी एक बच्चे का डाउट था तो आई एम टेकिंग इट एज अ डाउट। ये रे 1 है, इट इज कमिंग striking to mirror OM2 and parallel to mirror OM1. Now reflection takes place, then ray 2, the emergent ray, is parallel to mirror OM2. What is the angle of inclination of the two plane mirrors OM1 and OM2? हमारे पास दो इंक्लाइंड मिरर हैं OM1 and OM2, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो रे 1 पैरेलल टू OM1 है, रे 2 पैरेलल टू OM2 है। तो I have proved this angle is theta, this angle is theta, so this angle is also theta. This angle is I, this angle is also I. R is equal to I, laws of reflection. Theta plus I 90, then x plus I, इस एंगल को हम x मान लेते हैं, तो x plus I is also equal to 90. I gets cancelled, x is equal to theta. The two angles are theta, the third angle will also be theta. 3 theta is 180 and you get theta is equal to 60 degree.
Now, dear students, I'm going to discuss second problem based upon the plane mirror. This is one mirror, and this is another plane mirror. A ray enters here, gets reflected, and then it emerges out. Number of reflections takes place. The length of the mirror is 10 meter each. The distance between the two mirror is parallel mirror is 1 meter. The ray strikes the mirror M1, M2. Parallel is M1 dash, M2 dash at an angle of 45 degree. After how many reflections the ray emerges out? So this is a question. There are two plane mirrors. Each plane mirror is of length how much? Each plane mirror is of the length 10 meter each. Okay. Now, the distance between the two mirrors is 1 meter. The distance between the two mirror is what? 1 meter. And students, the angle at which the ray enters at one end of the parallel mirrors at an angle of 45 degree. The distance between the two mirrors is 1 meter. After how many reflections the ray emerges out? After how many reflections the ray emerges out? That's the question. अब आपको एक तरीका बताते हैं. हम लोग क्या करते हैं इसमें? In one reflection, we calculate the distance. In one reflection, we calculate the distance, how much horizontal distance it has moved. You know, it has moved x distance. Okay. Now, students, this is A, this is B, and this is C. Now, this angle is 45. Correct. So this angle will also be 45 according to laws of reflection. Then, dear students, अब हम ट्रायंगल है, in triangle ABC. What is AB upon AC? That is equal to tangent of 45 degree. If you take this triangle A, B, C, this angle is 45. AB is perpendicular, AC is base. So AB upon AC is tangent 45. Correct? AB is what? 1 meter.
AC is how much? X. Tangent 45 is 1. So X is equal to 1 meter. Means in one reflection, it has moved horizontally 1 meter. Now, students, there are n reflections. Suppose it has to come out of these parallel mirrors. इनको parallel mirrors में से बाहर निकलना है. तो there are n reflections. So nx total must be equal to 10 meter. What is x, students? That is 1. So n is equal to 10. तो conclusion क्या निकला? After 10 reflections, the ray will emerge out from the parallel mirrors combination. Means in parallel mirrors में multiple reflections जब होंगी तो ये बाहर निकल के आ जाएंगी after 10 reflections. So these are the two problems which I have discussed with you, my dear students, using the concept of you called reflections only, simple reflections I have taken. So इसमें कोई rocket science नहीं है, simple एक trigonometry का formula लगाया मैंने. Trigonometry का formula में हमने एक ही concept लगाया. That concept was simply of trigonometry. So this is how we people talk about the two problems which were asked by me, a student. Now, students, we are going to discuss curved surface. Means spherical mirror. I mean, spherical mirror में हम लोग क्या study करने वाले हैं? We are going to study the concepts of concave and convex mirrors, and we call it a spherical mirror. So here we go with spherical mirrors, right? ये 10th class के लिए lectures हैं, okay, which I am streaming live. Spherical mirror. The reflecting surface of a spherical mirror is curved inwards or outwards. I repeat, the reflecting surface of a spherical mirror is curved inwards or outwards. In fact, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass. Spherical mirror is in fact what? It is a part of spherical glass which is polished in from the outer or inner side. Good morning, Yash, Aditya.
This is a lecture for 10th class optics. So, spherical mirror is that mirror whose refracting surface is a part of a hollow sphere of glass. Okay, spherical mirror is in fact a part of a hollow sphere. Okay, now, dear students, one side of the mirror is well polished and reflecting, the other side of the mirror is opaque, often painted red. तो spherical mirror दो तरह के होते हैं. One is called concave mirror. And second is convex mirror. So first of all, students, we talk about the concave mirror, and later we will discuss about convex mirror, right? Concave mirror is that spherical mirror in which reflecting surface is towards the center of the sphere of which the mirror is a part. तो students, concave mirror क्या होता है? Concave mirror basically एक reflecting surface है. It is basically what? Reflecting surface है. It is basically a reflecting surface, okay, whose one is such that the refraction takes place at the inner surface, whereas the outer surface is polished. I'm going to sketch one concave mirror. Concave mirror वो mirror होता है जिसका outer surface तो polished होता है and inner surface is not polished, ये refracting हो जाता है. तो this is how a concave mirror is with us. This is called what? Concave mirror. और इसका अगर हम देखें तो ये concave mirror is a part of a hollow sphere, और ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है, ये इसका पोल है. तो P is a pole, C is a center. Correct? The concave mirror is one at which reflection takes place at the inner surface and whose outer surface is polished. That is what a concave mirror is. And it is the part of a hollow glass sphere. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Hollow glass sphere. मतलब एक hollow glass sphere आप ले लीजिए. उस hollow glass sphere के बाहर आप पॉलिश कर दीजिए तो उसके इनर पोर्शन सिल्वर्ड होगा, तो वहां पर उसको फिर आप ब्रेक कर दीजिए तो ये XPY ये कहलाएगा आपका कॉन्केव मिरर. जो P है इसको हम पोल बोलते हैं. C को हम, मैं काम करता हूं, मैं कॉन्वेक्स भी इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट दोनों बड़े इजीली आपको समझ आ जाएंगे. अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर इज बेसिकली लाइक दिस. तो इसका इनर सरफेस पॉलिश होगा और आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग होगा. तो ये भी P, इसी का भी पोल लगा देते हैं यहां, राइट. बाकी
Of course, it is also a part of a hollow sphere जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ऑब्वियसली अब P इसका पोल हो गया. ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स. और ये कॉनकेव. सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का आउटर सरफेस ये वाला बल्ज्ड आउट, उभरा हुआ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग होगा. और इसको कनकेव मिरर को इसका इनर पार्ट, तो ये उत्तल है, ये अवतल है. हिंदी में इसको अवतल बोलते हैं. करेक्ट. सो kids play school at Jabin Coaching Center. Sir, my name is okay. Kids play school. I am Jabin. Yeah, welcome. Sir, what is parabolic mirror? Okay, sure. Since this lecture was going on smoothly, sequence wise, hum parabolic mirror ko will explain also. Right now, I have noted down parabolic mirror. Sure. ये बेसिकली पैराबोलिक मिरर कार के हेडलाइट्स में यूज करते हैं हम लोग, बट आई विल बी कमिंग इन सीक्वेंस में. ठीक है. यू आर वेलकम. स्टे कनेक्टेड विद अस. So first of all, I'm giving you 10th class level lecture to the students of 10th class, and this is a live lecture, right? Okay. God bless you. Stay connected with us. Your students can join us. A lot of school joins us live, on screen, and we don't charge any fees for that. So concave mirror, XPY is a concave mirror. Kindly tell me the language which you feel comfortable. I'm using Hindi and English both. I'm comfortable in 3 languages: Hindi, English, and Punjabi. Okay. Okay, you read in class 10th. Okay, you are comfortable with both. Okay, you're welcome. And your good name is, kindly give your good name so that I can address you. Hope this lecture is productive for you and you are okay. Your name is JABIH, Jab. Hope this lecture is productive, I think, है ना? So stay connected, my son, my child, my student. So concave mirror, outer side polished, inner reflective. Convex, the outer side is reflective, inner side is polished. One thing more, P is called pole of the mirror. So same here. C is the center of curvature. We call C center of curvature. Okay, so this is also center of curvature. Same. Why to flood the board with more writings? And PC is equal to R. PC is equal to R. This is called radius of curvature. Radius of curvature. So, dear students, this XPY, this is called aperture of the mirror. Aperture. तो XPY को हम लोग aperture बोलते हैं. तो XPY is called aperture of the mirror. I repeat, XPY is the aperture of the mirror. Suppose this is X, this is P, this is Y. So XPY, as I keep on decreasing, aperture is decreasing, aperture is increasing. If aperture is very large, it looks like a part of a plane mirror. It means a spherical mirror is made up of large number of plane mirrors. Correct? Means a plane mirror is basically a large number of plane mirrors. Okay, fine. God bless you. Stay connected. You can WhatsApp to your other friends also. They can also be. Hi. So, I keep on watching your messages, but at the same time, I'm focusing here, right? You're welcome. I'm good, beta. And stay connected with the lectures if you're 10th class. And you can WhatsApp messages to your friends to
join this class, and this class will be unplugged class. You know what is the meaning of it? Is a natural class with you, as if I am teaching you in just in your classroom, और मैं कोई fast नहीं चल रहा. I am not rushing through. I'm just teaching with a cool mind. And you note down or don't note down doesn't matter, because this lecture will remain with you as a recorded video. So, अभी आप focus कीजिएगा इसको understand करने में सभी students, right? Okay? Everyone must focus to understand. और कुछ queries हो तो आप मुझे WhatsApp पे भी भेज सकते हो. 9814121996 is my WhatsApp number. आप इस पे डायरेक्टली भेज सकते हो, राइट? हाँ, आई एम गोइंग टू टीच एवरीथिंग, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू एवरीथिंग इज कमिंग अप मैन टुडे. डोंट वरी, बट स्टे कनेक्टेड. ओके, सो कनकेव मिरर इज ऑल राइट, कन्वेक्स मिरर इज ऑल राइट. ये आपको मालूम है, ये जो जा रहा है ना, ये वाला पीसी, यू कैन प्रोसीड टू इधर साइड, दिस साइड आल्सो, दिस साइड आल्सो. मैं आई एम जस्ट इरेजिंग दिस बिकॉज ये सेम इसको भी एप्लीकेबल है. तो ये सिंस कॉम्प्लिकेट ना हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं. वट एवर इज आई एम टेलिंग फॉर कनकेव मिरर, वही टर्म्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है. अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं इधर इधर, तो ये जो extended line है, suppose whatever you can take say APB, ये जो APB है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस. एक्चुअली मुझे ना कुछ बच्चे, some students I met and they said sir हमारा फिजिक्स बहुत वीक है, we are in all 10th and कुछ नहीं आता. तो मैंने decided that okay, I cannot be with you for hours in your place, but I can be on the YouTube or my app, VS School of Science, you can download. So that's why I am with you now. You are at your place, you may be in your classroom, you may be in your study room, but now it is a one-to-one home tuition kind of going on, right? So XP, this APB is called principal axis, okay? P is called pole. P को हम क्या बोलेंगे? Pole of the mirror. You know, जो center of spherical mirror है, that is called a pole of the mirror. Okay, XPY is aperture, right? Now, students, we are going to move with the focal length and all, as you are asking me. So, should we move further and we'll talk about, we have told about pole and all. Now, I'm going to tell you about principal focus and focal length of a concave mirror, right? मैं concave mirror की principal focus and focal length के ऊपर थोड़ा बताना चाहता हूँ, right? Students, light is form of energy which produces a sensation of vision. जो 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है वो मैंने रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है. जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमें मिल रहे हैं वो इस लेक्चर के बाद चले जाएंगे लाइव में YouTube के लाइव में, एंड यू विल फाइंड दैट we people can go through number of concepts. So, principal focus and focal length of a concave mirror. Principal focus, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, it's not a OTT movie that where you can forward and skip and forward and skip and forward. Now, learning is a meditation. Learning is a meditation. Okay. So, learning is a meditation, and meditation में जल्दबाजी मैं नहीं करने वाला हूं. प्रकाश एक विकर्ण ऊर्जा है, बिल्कुल, इट्स रेडिएशन ऑफ कोर्स, बट अभी हम प्रिंसिपल फोकस, ये नोट कर लिया जी मैंने, ये आंसर करूंगा. प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 9814121996, क्योंकि जैसे ये लाइव खत्म होगा लेक्चर, ये जो बी चैट है ये खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगी.
तो कमेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो आप 9814121996 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो विद नेम, सिटी, so that I'll be able to answer in special video doubt sessions, right? Means उसमें सवाल आपके, जवाब मेरे, ओके मेरे क्या हमारे, राइट? तो यू कैन व्हाट्सएप मी। हिंदी में भी कर सकते हो। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ of a concave mirror तो कनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस क्या है? हम लोग कई बार प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, बच्चों को प्रिंसिपल फोकस क्लियर नहीं होता, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो फास्ट पढ़ के इन चीजों को स्किप कर देते हैं और अल्टीमेटली वो बेसिक्स में फंस जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो रेज पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पोल है, तो जो पोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमें मिलता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और rays are coming from infinite distance, so these are parallel rays। ये सारी की सारी रेज क्या आ रही हैं? पैरेलल। these are coming parallel। ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं स्टूडेंट्स, अगर अपर्चर स्मॉल है तो दे गेट फोकस्ड एट वन पॉइंट। मैंने क्या एक लाइन बोला, अगर अपर्चर स्मॉल है तो अगर आप एरो नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। सीबीएसई और बोर्ड, स्टेट बोर्ड मार्क्स काट लेती है क्योंकि एरो लगा के ही ये रे बनता है, राइट? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर is a point on the principal axis, is a point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror। Well, dear students, ये reflected rays हैं, reflected rays, okay, these are all reflected rays, correct? So these rays, these are parallel rays, parallel rays, they are coming from a distant source and they get focused at one point। तो this point जहां पर ये आके ये फोकस हो जाते हैं तो that is called प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कनकेव मिरर का? एक पॉइंट है, कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पर सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज होके एक पॉइंट पे आ जाती हैं, राइट? अब व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर? फोकल लेंथ ऑफ concave mirror, students, PF is called focal length, right? Focal length of a concave mirror is the distance of principal axis F of the mirror from the pole P of the mirror. It is represented by a small letter f, correct? So concave mirror converges the parallel beam of light falling on it, therefore it is also called converging mirror,
हम इसको कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेम यू कैन अप्लाई फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यू नो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स करता है तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। कनकेव मिरर क्या करता है? कनकेव मिरर एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, जो फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर है, ये हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बहुत सारे बच्चे चाहेंगे कि मैं इसको प्रूव करके दूं। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं, और यही चीज आप अप्लाई कर सकते हो डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। शो दैट focal length of convex mirror f is equal to r upon 2 for convex mirror। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं। मैं बाद में कनकेव का भी बना दूंगा, बट पहले कन्वेक्स को हम समझ लें ताकि कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, we'll sketch its ray diagram। मैंने ट्रेडिशनल टीचिंग रखी है स्टूडेंट्स, so that majority of you study with this board, chalk board। तो उसमें फील रहता है। एक फील के अलावा मेरे को अच्छा लगता है। ये मेरे पास एक मिरर है। दिस इज ए मिरर विच इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये एक मिरर मैंने बनाया, राइट, विद यू पीपल, एंड आप इसका बहुत ध्यान से देख सकते हो। इस मिरर की खासियत क्या है कि हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मिरर, हम कनकेव पे चलते हैं पहले, कन्वेक्स नहीं, कनकेव पे चलते हैं। कॉनकेव, कन्वेक्स को मैं बाद में बना दूंगा। So rays are coming from infinite source। तो जब भी रेज इंफिनिटी से आती हैं तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। दैट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल विल always pass through center of curvature। Normal will always pass through center of curvature। So this is angle I, और जो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है that will pass through focus F, ये हमारा P। एरो लगाना बहुत ही जरूरी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई इतना डिटेल्ड नहीं लिखने का। आपने क्या लिखना है?
दीपक चौहान, क्या रिपीट करूं बेटा? ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको जब पूरा अपलोड हो जाएगा आप इसको रिप्ले भी कर सकते हो। हाँ, इतना मैं रिपीट कर देता हूं कि एक्स पी वाई एक हमारे पास कनकेव मिरर है और ये रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। तो ये रेज जब आते हैं इन्फिनिटी से तो ये एक पोजीशन के ऊपर, मिरर एक्स पी वाई के ऊपर ये पॉइंट ए पर ये स्ट्राइक करते हैं और एसी एक नॉर्मल, अगर हम यहां ऐसे करें ना ये वाला पॉइंट, तो यहां पर एक नॉर्मल छोटा सा टुकड़ा प्लेन ले सकते हैं मिरर का। तो यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल कहां पास करेगा? सेंटर से। वैसे भी ये एक थ्योरम है 9th क्लास में कि perpendicular drawn to the tangent to a circle always passes through a center. Okay, now dear students, this is angle I, ये angle I and ये angle R. Okay, correct. तो ये जो PF है that is called focus, जो PC है that is called radius of curvature. All right, so ये एंगल आई दे एंगल आर, इस एंगल को हम ले लेते हैं अल्फा। तो अगर हम फिगर में देखें, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल आर है तो आर मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। No, I, yes, I is equal to alpha, तो I is equal to R, so R is equal to alpha। अगर R इक्वल टू अल्फा आ रहा है स्टूडेंट, तो AF एंड FC आर इक्वल। इन ट्रायंगल ACF, ये एंगल R, ये अल्फा, दो एंगल इक्वल हैं। जब दो एंगल इक्वल हैं तो फिर जो साइड अपोजिट दे मस्ट बी इक्वल। AC मस्ट बी इक्वल टू CF। CF लिख सकते हो, FC लिख सकते हो, एक ही बात है। See, R and alpha, they are very small, they are equal। R and alpha well students, बहुत ध्यान से समझना आप इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना आप इस चीज को। ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आई एंड अल्फा दे आर इक्वल बिकॉज ये दोनों रेज पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल रेज है। तो आई इज इक्वल टू अल्फा। तो व्हाट डू यू से? ट्रायंगल ACF, अल्फा एंड आर इक्वल, देयरफॉर ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है मैथ्स की, तो AF मस्ट बी इक्वल टू FC। ये जो साइड्स हैं हमारे पास AF मस्ट बी इक्वल टू FC। मैं गलती से यहां AC लिख गया था। फिर से देखो, ये एंगल I, ये एंगल R इक्वल, I इज इक्वल टू अल्फा, ऑल्टरनेट एंगल अल्फा इज इक्वल टू R बिकॉज I इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू R। जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो AF इज इक्वल टू FC। AF इज इक्वल टू FC।
करेक्ट. नाउ अपर्चर, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है. अपर्चर ऑफ मिरर is very small. अगर अपर्चर ऑफ मिरर वेरी स्मॉल है तो A is lying almost close to P, therefore PF is equal to FC and PC is equal to what? PF plus FC. So PC is R, PF is F, then FC भी F, because ये इक्वल है. तो 2F is equal to R, तो F is equal to R upon 2. So this is a very famous result. क्या famous result है? Famous result is this, that there is a focal length relation with the radius of curvature. F is equal to R upon 2. That अगर हम radius of curvature का focal length radius ले लें, ओके, और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? What we get, students? We get relation. We get a relation between focal length and radius of curvature. Correct? Fine. Well, students, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं. हमारे पास एक मिरर है XPY, एक रे आ रही है. This ray is coming from infinity and it is parallel. इसको हम paraxial rays बोलते हैं. Which ray? Paraxial ray. And after reflection, what happens? We people find that after reflection, we find that it passes through the, what do you call? We passes through the focal length. Correct? So it passes through the focal length and ultimately you find that A is close to P. By geometry, we proved AF is equal to FC. That is PF is equal to FC. Why? Because A is very close to P. Aperture is very small. ये sign conventions है. So PF is equal to FC. PF is how much? That is F. FC is how much? Since PF is equal to FC, so each equal to F. So PF is F, FC is F. F plus F, R upon 2. So this is very, very important for board exams. Okay. This is extremely important for board exams. Now, students, we are going to move in the further topics, right? तो पहले आप इसको नोट कर लेना, and I rub it. This is very important. F is equal to R upon 2. It is very important for the exams point of view. And students, you can write the course of rays are as shown in the ray diagram. You need not to mention so many things about it, right? So now I'm going to tell you some new Cartesian sign conventions. I'm going to tell you some new Cartesian sign conventions. ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, इसके ऊपर हम लोग जब चलेंगे, जब मूव करेंगे, तो एक एक स्टेप्स मैं आपको क्लियर करता हूं. फर्स्ट,
The principal axis of the mirror, the principal axis of the mirror is taken along x-axis of the rectangular coordinate system and pole P of the mirror is taken as origin. जैसे ये एक मिरर है हमारे पास, we have this mirror. तो P को हम ले लेंगे origin. We'll consider P as origin. Okay. And along the positive x-axis, we'll take all the positive distances. Object is taken on the left side of the mirror. Light is incident from left to right. Object हम कहाँ लेंगे students? To the left of the mirror. Light travel करेगी left to right. All the distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. जैसे यहां हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजर करेंगे? पोल ऑफ द मिरर. सारे के सारे जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम लोग पोल ऑफ द मिरर से हम स्टडी करेंगे. We will be measuring all the distances from the pole of the mirror. All the distances we will be measuring from the pole of the mirror. All the distances will be measured from the pole of the mirror. Correct? Hope it is clear. Then next point is what, students? Next point is, if you say that these rays travels from left to right. Yes, the rays travel from left to right. If you are moving in the direction of the positive x-axis, the distances will be positive. Means if you are moving in the direction of the incident ray, left to right, parallel to principal axis, then the distances will be positive. If you are moving opposite to the direction of incident ray, that is right to left, then distances will be taken as negative. So, heights measured upwards above x-axis, जो भी हम height लेंगे in the ये positive होंगी and below it is negative. Above x-axis heights will be positive, below it will be negative. So, these are the new Cartesian sign conventions. All the distances has to be measured from the pole of the mirror. All the distances has to be measured from the pole of the mirror. All right. So, students, spherical mirrors are of two types, concave and convex. The principal axis of a mirror is taken along x-axis of the rectangular coordinate system, and pole P of the mirror is taken as the origin. The object is taken on the left side of the mirror, that is, light is incident on the mirror from left hand to the right hand. All the distances parallel to the principal axis of the spherical mirror are measured from the pole of the mirror. Point 4. The distances measured in the direction of the incident light are taken as positive.
The heights measured upwards above the x-axis are taken to be positive. The heights downward are taken to be negative. Correct? So these are the new Cartesian sign conventions we people have discussed. So students, this is one part of the lecture we have done, and f is equal to r upon 2 is very, very important. Now, after that, in the second part, I will be teaching you 6 cases and then mirror formula, linear magnifications, correct? तो ये आपको मैं बता दूंगा. तो थर्ड पार्ट में ये likely chapter will be completed. So thank you all for this. इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, and you will be able to understand so many things clearly. Correct? Thank you. Bye bye.